Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. This is me Walisha, an English instructor. Today I am going to discuss the parts of speech of English grammar. As far as I am concerned, parts of speech are the most important segment of English language. Actually, the English words are divided into 8 kinds or classes are called parts of speech. So now I'll be discussing one by one in each video. Today I'm going to discuss the very first part of speech, that is noun. I have defined here in very simple words that noun is the name of any person, place, thing or an idea. पहली बात तो हमने ये जहन में रखना है कि नाउन एक नाम है। किसी भी शख्स, जगह या चीज के जो नाम है उसे हम नाउन कहते हैं। It is not a thing, it is not a person, it is not a place. Actually, it is the name of any person, place, thing or an idea. I have given here examples one by one. Like we have a person. So I have given here some examples like boy. Now boy is the name of any person. ये एक नाम है. इसी तरह girl, man, Ali, doctor. These all words are the name of persons. These all words are the name of persons which are given to the people. इसीलिए हम इन सब words को noun कहते हैं. Secondly, I have written here place. Examples like we have school, park, city, country. These all are the name of different places. So these are considered as noun. Similarly, I have written here thing like chair, book, car, marker. The important thing that is to be kept in mind, ये मार्कर एक नाउन नहीं है. मार्कर का जो नाम है मार्कर, ये जो मार्कर थिंग मुझे नजर आ रहा है ये नाउन नहीं है. इसे जो नाम दिया गया है मार्कर, अब ये वर्ड जो मार्कर है ये नाउन है. इसी तरह मेरे पास बोर्ड है, तो ये जो मटेरियल बोर्ड है ये नाउन नहीं है. इसका जो नाम दिया गया है, इसे जो स्पेसिफिक नाम रखा गया है बोर्ड, इस बोर्ड को, वर्ड बोर्ड को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. इसी तरह आई हैव रिटन हियर आर एन आइडिया. अब ये स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि जी आइडिया क्या होती है. आई हैव गिवन हियर सम एग्जांपल्स. आइडिया आर एक्चुअली सम इमोशंस, सम कॉन्सेप्ट्स which actually exist in our mind but we cannot see them. Names are given to such concept, to such ideas. अब उन नाम को हम फिर क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. इस तरह मैंने लिखा है फ्रीडम. अब फ्रीडम जो है ये एक स्टेट है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट है बट वी कैन नॉट सी इट. बट अ नेम इज गिवन टू दिस स्टेट, टू दिस इमोशन. इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसे नाउन कहते हैं. फ्रीडम हो गई, हैप्पीनेस हो गई, खुशी. इट इज अ स्टेट. We cannot touch it, we cannot see it, but it is a name that is given to a specific state. इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसे नाउन कहते हैं. इसी तरह हमारे पास स्लेवरी है. तो व्हाट इज स्लेवरी? स्लेवरी इज अ नेम दैट इज गिवन टू अ पर्टिकुलर स्टेट. अब स्लेवरी भी एक नाम है, एक हालत का, एक इंसानी हालत है, गुलामी जिसे हम कहते हैं. तो स्लेवरी क्या हो गया? ये भी एक नाउन है. सिमिलरली डेथ. Death is a state. It is a specific name that is given to a particular state. अब हम इसीलिए इसको नाउन कहते हैं. लव. लव भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको एक नाम दिया गया है, जो एक इमोशन है, बट वी कैन नॉट टच इट, वी कैन नॉट सी इट, hence it is also a noun. Now we will discuss the kinds of noun one by one. There are 8 main kinds of noun. Some grammarians think that there are many kinds, but the most prominent ones, there are 8 only. So I'll be discussing one by one. Let's discuss the kinds of noun. So without any delay, let's start the kinds of noun. The very first 2 kinds we have, that is common noun and proper noun. I have written the definitions. Common noun, it is a general name of a person, place, animal or a thing. Means a name that is given to all, a name that is shared to all, a name that is not particular, a name that is not specific. उस नाम को हम क्या कहते हैं? Common noun कहते हैं. See, the word common itself justifies
that it is a common noun. It is a common name. It is a general name of a person. See, I have given here some examples like boy. अब बॉय किसी एक लड़के का नाम नहीं है. It is not a property of a boy, but it is shared to all the boys of the world. It is given to all the boys of the world. Hence, we call it common noun. Secondly, we have country. अब country, जो word country है, जो name है, ये किसी खास मुल्क के लिए नहीं है. All the countries in the world are given the same term country. So it means that country is a common noun. Similarly, we have fish. अब फिश क्या है? किसी एक मछली के लिए स्पेसिफिक नहीं है. It is not a particular name, but it is given to all the fish in the world. दुनिया में जितनी मछली है, हम सबको यही फिश का नाम देंगे. इसीलिए हम इसे क्या कंसीडर करते हैं? कॉमन नाउन. फून, इट कुड बी एनी फून. अब कोई भी फून हो, उसको हम फून कहते हैं, तो वो क्या हमारे पास कॉमन नाउन है. The second type we have, that is proper noun. I have defined it. It is a particular name of a person, place, animal or thing. Particular means specific name. ये किसी शख्स का ओरिजिनल नाम होता है. That is not shared to all the people, all the things, all the places. It is a specific name, particular name. Now I'll be discussing both of the kinds comparatively. जब मैं comparatively discuss करूंगा, आपको समझ आ जाएगा. See, common noun में मैंने क्या बताया था? boy. Boy is a common noun that is given to all the boys of the world. लेकिन Ali is also the name of a boy. लेकिन अली का नाम दुनिया के सब बॉयज के लिए इस्तेमाल नहीं होता. This word is specific for a special boy. एक खास लड़का है, उसी के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, अली. Similarly, we have the term America, the noun America. Now, the word America is not given to all the countries of the world. It is just specific to one country. अब ये जो word America है, ये अमेरिका की अपनी प्रॉपर्टी है. ये वर्ड उसकी पोजेशन है. Similarly, we have goldfish. See, comparatively मैं फिर समझा दूंगा कि हमारे पास कंट्री है, it is a common noun. America, it's a proper noun. Similarly, fish, मछली, common noun. Goldfish, now it is a proper noun. Now it is a proper noun क्योंकि ये एक खास किस्म की मछली है. It is a specific name. Hence we call it proper noun. अब फोन की मैंने एग्जांपल दी थी कि फोन दुनिया में जितने भी मोबाइल हैं, सबके लिए आप फोन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सब फोन को आईफोन नहीं कह सकते. iPhone is a particular name. It is a specific name that is given to a specific type of phone. ये कंपनी है दुनिया में स्पेशली. अब व्हीकल कह सकते हैं, आप कार कहते हैं. कार क्या है? ये एक कॉमन नाउन है. लेकिन आप अगर कहें कि जो टोयोटा कंपनी की है, आप खास कंपनी को मर्सिडीज कार कहें, तो मर्सिडीज कार क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया. तो जो आम नाम है वो सबके लिए है. जो प्रॉपर नाउन है वो स्पेसिफिक है, वो पर्टिकुलर है. I have written here two important characteristics, means how to recognize, how to identify a common noun and a proper noun. Common noun और proper noun को हम differentiate कैसे कर पाएंगे? हम कैसे recognize करेंगे कि ये proper noun है, ये common noun? Two main characteristics हैं. If you just see the two important characteristics, you can easily identify a proper noun and a common noun. See, ये कॉमन नाउन की पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज इट इज गिवन टू ऑल. मींस दिस नेम इज नॉट स्पेसिफिक टू वन पर्सन, इट इज शेयर्ड टू ऑल. द वर्ड बॉय इज शेयर्ड टू ऑल द बॉयज इन द वर्ल्ड. द वर्ड कंट्री इज शेयर्ड टू ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड. ये किसी खास के लिए नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है. इफ यू टॉक अबाउट द प्रॉपर नाउन, it is a special characteristics. If you talk that Ali, it is not given to all the people. If you say Pakistan, it is not given to all the countries. It is specific to one country. The second character we have, that first I'll discuss proper noun. Second character, that its first letter is always capitalized, even it comes in the middle of sentence or in the end of sentence. We always capitalize its first letter. हमेशा इसके जो पहला लेटर है वो कैपिटलाइज होता है. स्टार्ट में आ जाए, मिडल में आ जाए, एंड में आ जाए, वी ऑलवेज कैपिटलाइज इट्स फर्स्ट लेटर. ये प्रॉपर नाउन की कैरेक्टरिस्टिक है.
characteristics है. But if you talk about the common noun, its first letter is not capitalized unless it comes in the beginning of sentence. There is only one case, that if common noun comes in the beginning of sentence or at the beginning of sentence or at the commencement of sentence, so we capitalize it. Otherwise, it is always written in small letters. So hope you got these two important kinds. So the third kind of noun we have that is often confusing is abstract noun. The definition I have written: the name of emotions, qualities, states, and actions which cannot be perceived with five senses. The most important thing is that these emotions, these concepts cannot be perceived with five senses. Like we have five senses, means we cannot see these concepts, we cannot touch, we cannot smell, we cannot taste, means these cannot be touched, cannot be perceived. So such concepts, the name of such concepts are known as abstract noun. Let me give you a very simple example. Suppose I write the word here love. So let's test it. Can we perceive it or not? आया कि हम इसे perceive भी कर सकते हैं या नहीं? Suppose मैं कहता हूँ चलो love को देख लेते हैं. Can I see it? Not at all. लेकिन मैं कहता हूँ चलो भाई love को taste करते हैं. Can we taste it? Not at all. मैं कहता हूँ जी चलो love को सुनते हैं. Can we listen it? Not at all. मैं कहता हूँ जी चलो love को सूंघते हैं, यहाँ love की खुशबू आ रही है. Is it possible? Means a concept that cannot be perceived with five senses. So such concept, such emotion, such action is known as abstract noun. I have written the note that these concepts are intangible. These are not tangible, means these concepts cannot be touched. Okay, इनकी कोई physical existence नहीं होती है and do not have physical existences. And I have given here the detailed examples. Like the very first we have emotions. Happiness. Happiness को कभी देखा है? We can just feel it. We cannot see it. We cannot hear it. We cannot smell it. We cannot taste it. Sadness. See, sadness is also an emotion. न तो हम इसे देख सकते हैं, न चख सकते हैं, न सुन सकते हैं. Just इसको feel कर सकते हैं. Means any concept that can only be felt is known as abstract noun. Like fear, खौफ. ये एक अंदरूनी हालत होती है जिसे हम ना कभी देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं. So that is what? That is an abstract noun. Next we have that is qualities. Any quality, like we have beauty. Have you ever seen beauty? Not at all. We can just feel it. Now you might be getting confused कि जी हम तो एक खूबसूरत शख्स को देख सकते हैं. That is beautiful. That is not beauty. That is beautiful. Honesty, ईमानदारी. Have you seen honesty? Not at all. हाँ, आप एक honest person को देख सकते हैं, but not the honesty. आप एक ईमानदार शख्स को देख सकते हैं, लेकिन उसकी ईमानदारी को नहीं देख सकते. कभी ईमानदारी देखी है? Not at all. Kindness, आप एक kind person को देख सकते हैं. You can see a kind person. You can touch a kind person, but you cannot see his kindness. उसके अंदर जो एक क्वालिटी है काइंडनेस की, वो आप नहीं देख सकते. Like we have states, we can have such states which are just abstract concepts which cannot be seen, which cannot be touched. Like we have youth. Youth, it is a state of life, लेकिन हम इसे कभी न देख सकते हैं, न टच कर सकते हैं. Like we have slavery. कभी गुलामी देखी है? Not at all. Slavery is just a concept that we can only feel it. We cannot see it. We cannot touch it. Similarly, we have freedom, आज़ादी, liberty. हमने न freedom देखी है, ना हमने कभी freedom को सुना है, ना हमने उसको कभी taste किया है. We can just feel it. Similarly, we have justice, insaf. It is also an example of state. The last example we have like actions. Actions like construction. Construct is a verb, but construction ये एक noun है. तामीर को हम नहीं देख सकते. तामीर करना अलग बात है, but construction itself is an abstract noun. Similarly, laughter जिस तरह हमारे पास है हंसी,
लाफ्टर को हम नहीं देख सकते. हंसना अलग है, दैट इज अ वर्ब, बट लाफ्टर इटसेल्फ इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. हेटेड, नफरत, nafrat is also, hatred is also an abstract concept. We have love, love is also an action that is considered as an abstract. And now the last we have, that is movement. Move is a verb, but movement is an abstract concept. We cannot see, we cannot touch it. Hence these all are the examples of abstract noun. I hope you got it. So the next remaining kinds of noun will be uploaded in subsequent video. Thank you so much. Thank you for watching my video.